So after that you have to study about EMF equation. That is very very important point. And after that transformation ratio. अब आप बोलोगे कि ईएमएफ इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको पढ़ना है, तो ये ईएमएफ इक्वेशन होता क्या है? अब सपोज आई एम टेकिंग दैट EMF is induced in secondary side and primary side. You have to calculate the EMF. That means you have to calculate the equation of EMF induced in the primary side and the secondary side. So for that we have to consider one waveform. For EMF equation of transformer, we have to consider one waveform like this. This will be the waveform. In which the flux is there. So at this is the time period t. This will be t by 2 and the maximum flux will get at point t by 4. Okay, that is nothing but a waveform where flux is flowing and this is phi m, where we are getting this is phi m. Okay, so what you have to remember for drawing the EMF equation, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ that is the simplest way for calculating the EMF equation, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये EMF इक्वेशन होता क्या है और किस तरह से इजीली डिराइव करें इस चीज को. अब देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये पर्टिकुलर वेवफॉर्म को बनाना है. ये पर्टिकुलर वेवफॉर्म में ये डिसाइड करना है कि आपका जो जीरो से जब फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट पॉइंट दिस, एट दैट पॉइंट योर टाइम इज t by 4. तो ये चीज बहुत याद रखने की है आपको. दूसरा, अपन ने इसके पहले वर्किंग प्रिंसिपल देखे. अब वो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या क्या देखा अपन ने? N1 देखा, दैट इज प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स. फिर अपन ने देखा V1 देखा, देन V2 देखा, इसके प्रीवियस में V2 है सेकेंडरी साइड का वोल्टेज. फिर अपन ने N2 देखा, ठीक है. फिर अपन ने E1 देखा और अपन ने E2 देखा, ठीक है. फिर I1 देखा और I2 देखा. So these are the things which are present in particular transformer circuit. So N1, V1, V2, N2, E1, E2, I1 and I2. Okay. Now what you have to remember, the main thing is flux, that is phi. Okay, because alternating flux is there. Now how to start the equation? So how to start the equation? When you are saying EMF is induced, आप जब बोल रहे हो EMF induced होता है, तो EMF induced कैसे होता है? कैसे होता है EMF induced? By Lenz's law. It represented by Lenz's law. और Lenz's law क्या बोलता है? कि Lenz's law बोलता है कि that E, when E is induced, that is nothing but n d phi by dt. E is induced, that is nothing but n d phi by dt. अब जब n d phi by dt बोल रहे हैं अपन, इसका मतलब क्या है कि there is a rate of change of flux with respect to time. So firstly you have to find out the rate of change of flux with respect to time. Okay, so when you are talking about rate of change of flux, see here, अब जीरो टाइम पे जो आपका फ्लक्स इंक्रीज होना चालू हुआ एट दिस पॉइंट, दैट मींस t by 4, योर फ्लक्स इज phi m. अब आपका जो फ्लक्स phi m है, तो सबसे पहले अपन d phi by dt निकालेंगे. ओके, तो d phi by dt क्या होगा? दिस इज d phi, सो d phi इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. d phi इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. सो आपका जो d phi रहेगा वो रहेगा phi m. क्या है आपका d phi? phi m. दिस इज वेरी सिंपल स्टेप. नाउ नेक्स्ट इज dt. कितने टाइम में वो phi m बना? तो वो बना अपना t by 4. तो दिस विल बी t by 4. मतलब समझ में आया क्या कर रहे अपन? अपन ने सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाला, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज नथिंग बट phi m. फिर अपन ने निकाला dt, तो रेट चेंज ऑफ टाइम, सो दिस इज t by 4. अब अपन दोनों को मिला ले तो क्या बनेगा? ये d phi by dt. ठीक है, तो ये d phi by dt क्या होगा? दैट इज phi m divided by
t by 4. Okay, and that is equals to 4 phi m by t. So what is phi m? Phi m is the maximum flux in the core. Okay, so according to the time period t is always equals to 1 by f, that is frequency. T is always equals to 1 by f, that is frequency. So therefore this equation will be now, if I am putting 1 by f instead of t, this will be equation now 4 f phi m. This will be equals to 4 f phi m. Okay, after this you have to put this in this equation, that is E. So therefore your small e will be, just I am writing this thing, therefore your small e will be now n d phi by dt. This will be the e. If you are putting this value in this, then you are getting the average EMF. This is called as a average EMF. This average EMF is equals to n then 4 into phi f phi m and 4 f phi m, or you can say in another words E is equals to 4 n f phi m. So this is the average EMF. This is called as a average EMF induced. Okay, but we want RMS value of induced EMF. What we want? RMS value of induced EMF. After that, you know the formula of form factor. तो form factor क्या है? Form factor is equals to, क्या है form factor? That is nothing but your maximum or what? That is RMS. RMS value divided by average value. RMS value divided by average value. अब ये जो RMS वैल्यू है डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू है, इसको अपन पुट अप करेंगे. सो देयरफॉर योर E विल बी नाउ, what is your E? E will be now, that is 1.11 multiplied by average value. So 4 n f phi m. So therefore your E induced EMF is equals to 4.44 f n phi m. So this will be your EMF induced. Since your phi m will be depend upon magnetic flux density, so maximum flux density into area. Since your phi is equals to maximum flux density into area, so therefore E is equals to, we can say 4.44 n f b m into A. So this is the EMF equation, generalized EMF equation of transformer. This or this you can say. Okay. So if you are talking about primary side, then it is E1 4.44 f n1 phi m, or you can say E2 equals to 4.44 f and phi n2 phi m. Okay. Now we have to just summarize the things, because ये छोटा बोर्ड है, छोटे बोर्ड में पूरे स्टेप्स आए नहीं है, इसलिए मैं आपको एकदम सिंपल स्टेप्स में बताता हूं अपन ने क्या क्या किया है. ठीक है. अब सिंपल स्टेप क्या है? पहले क्या किया अपन ने? सबसे पहले बोले कि EMF इंड्यूस होता है, दैट EMF इंड्यूस इज गिवन बाय n d phi by dt. क्या बोलते हैं अपन? n d phi by dt. ठीक है. उसके बाद क्या बोला गया अपन ने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये पर्टिकुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपन ने सेपरेटली निकालना है. तो क्या किया अपन ने? दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपन ने सेपरेटली लिखे d phi by dt. अब ये जो d phi by dt है, तो d phi क्या है आपका? तो d phi इज नथिंग बट योर phi m. ठीक है. और dt इज नथिंग बट योर t by 4, जो आपने वेवफॉर्म में देखा था कि 0 से स्टार्ट हुआ, phi m तक गया, कौन से टाइम पे गया? t by 4 टाइम पे गया. ठीक है. और आपका phi m क्या है?
phi m is depend upon two quantities, that is nothing but one is Bm, that is magnetic flux density, that is maximum flux density you can say m, and another is area. Okay, ठीक है, वो अपन बाद में पुट कर सकते हैं. ठीक है, अब यहां पर देखिए अपन ने डी फाई बाई डी टी निकाल लिए, ये वाला. फिर अपन ने देखा कि ये वैल्यू जब अपन ने इसमें पुटअप किए तो E इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाय डी टी में जब वो वैल्यू पुटअप किया तो वो बन गया फाई एम डिवाइडेड बाय टी बाय 4. नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हेन यू आर पुटिंग 4 and 5m divided by t. And what is t? T is nothing but, since your t is nothing but 1 by f. T is nothing but 1 by f. So therefore this is equals to 4f and 5m. So this is the called as a average EMF induced. Now we want RMS value of E. So therefore RMS value, that means induced EMF, RMS value of induced EMF is equals to 1.11, that is form factor multiplied by average value. The average value is 4f and 5m. Okay, so therefore your E induced EMF in case of transformer E is equals to 1.11, that means 4.44, because you have to multiply this 1.11 into 4, so 4.44 f and 5m. So this is the induced EMF across the transformer. And if you are considering induced EMF in primary side and secondary side separately, then I can write down this E1 is equals to, for primary side, 4.44 f and 1 5m. And for secondary side it is E2 is equals to 4.44 f and 2 5m. So these are nothing but the EMF induced across primary side and EMF induced across secondary side. And one more thing, if you are putting 5m is equals to Bm into A, then this equation will change into 4.44 f and 1 Bm into A, and similarly E2 is equals to 4.44 f and 2 into Bm into A. So for this lecture we stop, because our aim is to find out the EMF equation and working principle of transformer. So in this lecture we studied about the definition of transformer, then what is the application of transformer, that is nothing but types of transformer. ठीक है, core type, shell type, berry type. हाँ, one more thing is that in case of transformer there are transformer is depend upon the purpose, so therefore there are different types of transformer. One is construction wise, तो construction wise बहुत main होता है, that is the basic one. उसके वाइज अगर देखा गया तो कोर टाइप, शेल टाइप और बेरी टाइप होता है. फिर अगर अपन ने देखा पर्पस, अगर फेज वाइज देखा तो सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर होता है. फिर अगर अपन ने देखा है पर्पस अकॉर्डिंग तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है. फिर अगर अपन ने स्टेप अप स्टेप डाउन वाइज देखा, मतलब अगर वोल्टेज अप हो गया तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज डाउन हो गया तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. तो ये सब चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस